मंडे 12 सितंबर 2022 को इस चैट विद डॉक्टर के HCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में हमारे सभी व्यूअर्स जो डॉक्टर के अग्रवाल के यूट्यूब फेसबुक पे से जुड़े हैं उनका स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमारे सबके मेंटर और हमारे सबके गुरु जो हेल्थ गुरु डॉक्टर के अग्रवाल जी इस प्रोग्राम को लेते रहे हैं, चैट विद डॉक्टर के HCFI, और उसी को हम उनकी टीम हम लोग कंटिन्यू कर रहे हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक लिया है ये बहुत ही रिलेवेंट टू दी जो आज के सिनेरियो में बहुत इम्पोर्टेंट है। और इंटरनेशनल टॉपिक है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ये सब्जेक्ट आज इसलिए लिया है कि अभी आज के करीब 4 दिन बाद ये इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि 16 सितंबर इज सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर एवरी ईयर। तो ये डे जो है दिस ईयर इज जो डे है 16 सितंबर फ्राइडे को है, एंड दिस इज द 28th जो इसको हम वर्ल्ड ओजोन डे भी कहते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। और थीम फॉर दिस ईयर ऑफ दिस इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज द ग्लोबल कम्युनिकेशन फॉर प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो इसीलिए इसका जो हमने थीम है फॉर प्रोटेक्टिंग जो है लाइफ ऑन अर्थ बाय वे ऑफ द ग्लोबल कम्युनिकेशन। और आप सभी जानते हैं कि हमारे इम्पोर्टेंस जो है ओजोन लेयर की हमारे लाइफ में कितनी है। मैं जस्ट इसकी तो एक बैकग्राउंड दूंगा और उसके बाद ही हम अपने गेस्ट को इनवाइट करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले ये समझ लें कि व्हाट इज ओजोन। हमारे व्यूअर्स जो जुड़े हुए हैं वो समझ लें ओजोन क्या है। ओजोन बेसिकली ए फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, सभी जानते हैं O3 इसका फॉर्मूला होता है। और जो ओजोन है ये गैस, दिस इज यूनिक फिजिकल जो इसकी प्रॉपर्टी है। दिस अलाउ दिस जो ओजोन है दिस अलाउ ओजोन लेयर टू एक्ट एज ए सनस्क्रीन। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर बनती है ये एक सनस्क्रीन का काम करती है। सो दिस इज प्रोवाइडिंग एन इनविजिबल फिल्टर टू हेल्प प्लैनेट प्रोटेक्ट ऑल द लाइफ फॉर्म फ्रॉम जो है दी सन जो डैमेजिंग जो होती है यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो आती हैं हमारे आपके सन में। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेज होती हैं, आपको दिन में भी धूप में जाते हैं तो देखते हैं, बट एक्चुअली साइंटिफिकली इसमें एक अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं, उनसे कैंसर वगैरह होते हैं और भी स्किन डैमेजिंग जो है कई चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो यूवी रेज में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं इसमें जो रेज जो 3 तरह की होती हैं, UVA, UVB, UVC, 3 तरह की जो डिफरेंट जो है एनर्जी लेवल्स में होती हैं। तो जो यूवी वे जो बी और सी हैं दिस इज हाईली एनर्जेटिक एंड मोर डैमेजिंग टू दी जो है लाइफ फॉर्म जो है ऑन अर्थ होती है। और इसमें जो ये जो यूवी बी होती है, पर्टिकुलरली यूवी की जो बी रेंज है ये इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर इन दी स्ट्रेटोस्फीयर। आप समझ लें स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट जो वो होते हैं फॉर्म होते हैं, हमारे ऊपर जब से जाएंगे ट्रोपोस्फीयर होता है, उसके जो 50 किलोमीटर के ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें ये यूवी बी होती है। और अगर इसमें ओजोन लेयर अगर डैमेजिंग हो गई है तो दिस विल जो है जो भी इसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज बी रेंज की एब्जॉर्ब नहीं होंगी और वो धरती पे आएंगी, अर्थ पे आएंगी और हमारे लिए स्किन को डैमेज करेंगी, एंड ऑल्सो हमें जो है कैंसर वगैरह और बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। सो बेसिकली दिस मोस्ट यूवी रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय दिस ओजोन एंड दिस इज एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है ओजोन लेयर। विदाउट द प्रोटेक्टिव जो इफेक्ट ऑफ दिस ओजोन लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट हैव इवॉल्व द वे इट हैज एक्चुअली। अगर आप इसको डैमेज हो जाएगी, आपने सुना होगा ओजोन होल करीब 85 में बहुत पहले जो ऑब्जर्व किया गया और साइंटिस्ट ने देखा टीम ने कि जो ओजोन होल है जो एंटार्क्टिक ओजोन होल की बात की थी उसमें जो है ये आया था। और इसका रीजन था कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हमारे एटमॉस्फेयर में हम लोग रिलीज करते हैं, तो जो हमारा जो बैलेंस बिटवीन जो होता है प्रोडक्शन एंड जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन का जो होता है उसकी वजह से अगर आपको
सपोज अगर आपके क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स हैं ऑन सिंथेटिक कंपाउंड्स जो कि रेफ्रिजरेशन से, एयर कंडीशन से रिलीज होते हैं, और फोम सेक्टर से बहुत से, और स्प्रे हम यूज़ करते हैं, बहुत से फोम स्प्रे यूज़ करते हैं। ये सबसे बहुत से आपके सिंथेटिक कंपाउंड हैं, जैसे वो उनको बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जैसे फ्लोरोकार्बन्स हैं, हेलोन्स हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। ये बहुत से सभी आपके हमारे बहुत दिनों से जो हम रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन जो कंप्रेसर वगैरह होते हैं उनमें ये गैस यूज होती थी पहले। धीरे धीरे इनको हमने सब लोगों ने मतलब जो है इंटरनेशनल जो ट्रीटी हुई, वियना कन्वेंशन हुआ 1985 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1997 में आया, तो डिफरेंट कंट्री में एग्रीमेंट हुआ और ये इनके फेज आउट के प्रोग्राम्स हुए और इंडिया ने इसमें बहुत लीड ली। उसके बाद इसके अल्टरनेटिव ढूंढे गए और इंडिया ने पर्टिकुलरली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका ओजोन सेल, उसमें इन्होंने एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स निकाले 2014 में, फिर 2019 में इनको आगे नोटिफाई किया। इसके अंडर बहुत से जो है बहुत से फेज आउट हुए हैं। अभी रिसेंटली 1 जनवरी 2020 से एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है SCFC 141B जो फोम सेक्टर में यूज होता है, तो उसको भी अभी बैन किया गया है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रूल्स के अंदर। तो ये बहुत से एक्शन लिए गए और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसका ओजोन सेल है, एक सेपरेट डेडिकेटेड ओजोन सेल है, उसमें बहुत काम कर रहा है और उसमें डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। उसमें ऑनलाइन जो नेशनल लेवल पोस्टर स्लोगन कम्पिटिशन्स हैं और लोगों में अवेयरनेस, उसी कड़ी में ये SCFI का दिस प्रोग्राम जो हम आज ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि लोगों में जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं जो हम घरों में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशन में, फोम सेक्टर में, ये सबको कैसे हम जो है जो उसमें जो क्लीन सब्सटेंस अगर यूज हो और इंडस्ट्री कैसे उसको यूज करे, कैसे हम प्रमोट करें। हम केवल देख के उन्हीं सब्सटेंस को ले हैं जहाँ पे इसमें लिखा हो कि ये जो है ODS फ्री है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस फ्री है, जो है रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशंस है और फोम है। तो आज उसी में हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ हमारे फ्रेंड और हमारे कलीग रहे डॉक्टर M द्वारकानाथ जी हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पुडुचेरी गवर्नमेंट एंड जी फॉर्मर मेंबर सेक्रेटरी पुडुचेरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में और हमारे दिल्ली गवर्नमेंट में भी सीनियर ऑफिसर रहे हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर M द्वारकानाथ जी को आज इस प्रोग्राम में और उनसे हम जो है डिटेल में सुनेंगे कि इसमें हमारा हम किस तरह से इसको हम पर्टिकुलरली जो ओजोन को लेयर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे अल्टरनेटिव जो ODS है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ओवर टू द्वारकानाथ सर, वेलकम सर। नमस्कार सबको, नमस्कार। एंड मैं सर द्वारकानाथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि नाउ यू टेक द प्लेटफॉर्म एंड जस्ट एजुकेट अस अबाउट दिस पर्टिकुलरली जो आज का ओजोन डे हम मना रहे हैं। दो अभी 16 सितंबर को है, बट आज हमने इस प्रोग्राम को लिया हुआ है 4 दिन पहले, क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी मंडे को होता है, तो हमने आज इस प्रोग्राम को लिया। ओवर टू द्वारकानाथ सर। Thank you. Good afternoon to all the viewers, and thank you, Dr. Anil Kumar ji, for your kind introduction. And जैसे Dr. Anil Kumar has given a background on International Ozone Day, it is celebrated all over India as well as across the world. ये इसलिए किया जाता है जैसा बाकी सब दिन भी हम सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और वाइल्ड लाइफ वीक और टाइगर डे और एलिफेंट डे जैसा है, वैसा इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर ये किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंस इसलिए है, ओजोन जैसा ऑक्सीजन का O2 होता है वैसा ओजोन का O3 होता है। इट इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट, बट इसमें वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज ओजोन इज अ सेवियर if it is above, and ozone is a pollutant if it is below. If it is there in the atmosphere, then it is called a ozone pollutant. एयर पोल्यूशन में होता है, उसी का वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है बोथ ऑन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स में। बट इन द ट्रोपोस्फियर जैसा डॉक्टर अनिल ने बताया था, स्ट्रेटोस्फियर में जब अगर ओजोन पाया जाता है, देन इट एक्ट्स एज एन अम्ब्रेला अगेंस्ट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. So
in 1970s, the first next slide please. मैं एक छोटा से PowerPoint presentation is there with me. I will try to run through the presentation so that viewers will have a comprehensive view regarding that. uh, like what is the Montreal Protocol is the international agreement which we India was a signatory in 1992. 1992 में हमने इसको साइन किया है. इसी में बहुत सारा कंपोनेंट्स थे. So after 92, after almost 30 years now, we are in 2022. What globally and India has achieved is a tremendous achievement. This is called, global cooperation for any sustainable development. This is one of the classical success story for such a cooperation. What has happened? Antarctica ka upar we have first found out a hole of ozone. That is because the ozone was there preventing above the earth surface, whereas a portion of it have vanished because of primary and secondary reactions that happen with the gases substance. So what happened first in 1973 or 76, we have found 85, we have found the first ozone hole. And after that we have realized the importance of ozone and how it protects, because it protects us from many ways from the harmful ultraviolet radiation. So after 30 years of various programs that were implemented globally, today what we have achieved is tremendous. What we have achieved? We have achieved 98% of ozone depleting substances have been phased out. This is a tremendous achievement. Globally this has happened, and also this has impacted directly on climate change also. क्योंकि phase out of ODS means all ODS substances have high global warming potential also. So इस वजह से जब ओडीएस सब्सटेंस बाहर चले गया एटमॉस्फेयर से, then global warming cause किया substances have also gone out. This is equivalent to 135 billion tons of carbon dioxide has been phased out. And 1985 में whatever we have seen above the atmosphere, that fall, that has almost become nil, or it is fully covered with ozone again. And also the indirect or direct health benefit because of the harmful ultraviolet radiation have been estimated globally to the tune of 1.8 trillion US dollars. So एक ही एक चीज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का फेस आउट करने में what we have achieved is multiple positive benefit. One, reduction in the carbon dioxide emission, because all ozone depleting substances are having high global warming potential. इस वजह से जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस था वो फेस आउट हो गया. एंड देन अंटार्कटिक का ऊपर जो फोल पाया गया था, that has become normal and it has been covered and it prevents the ultraviolet radiation to come. And 1.8 trillion US dollar का health effect benefit by way of individual cost of treatment and by way of losing of man hours and manpower. All these things globally it has been estimated that health benefit is to the tune of 1.8 trillion. And also the agriculture and the fisheries yield that has improved because of the prevention of harmful ultraviolet radiation, because that happened because of ozone depletion. That has been estimated to the tune of 460 billion US dollars. हम the तमिल में we always used to tell, एक ही पत्थर में है ना बहुत सारा फल नीचे गिर जाता है. If you throw only one stone towards the tree which is having ripened fruits, number of fruits fall down. That we call in Tamil as Ore Kallil Pala Mangai. That is आम का पेड़ में अगर आप फल पत्थर ऊपर उठा के डालते हैं,
एक ही पत्थर में बहुत सारा फल नीचे गिर जाता है, वैसा ही एक ओडीएस सब्सटेंस का फेस आउट करने में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, कम हो गया, अंटार्कटिक वो फोल कम हो गया, हेल्थ बेनिफिट बहुत सारा आ गया, और एग्रीकल्चर एंड फिशरीज का यील्ड बहुत ज्यादा हो गया, एंड this has contributed to greenhouse gases reduction also, and around मैंने जैसा पहले सबसे पहले बोला था 98% of ozone depleting substances has been phased out globally. Next please, next slide. Yeah, back. नहीं, ये नेक्स्ट मैंने मेरा अपना खोला है, सो इसलिए मेरे को पता नहीं है। नहीं, इसका पहले वाला। यस ये मैं हमेशा कहता था, एटमॉस्फेयर में अगर होंगे तो वो पोल्यूटेंट है, ऊपर होंगे तो दैट इज अ सेवियर. सो आई ऑलवेज यूज टू डिफाइन presence of a substance at a wrong place at wrong concentration in wrong physical and chemical form is generally called as pollution in literal terms or in uneducated terms. But वो इसी के एक और कंपैरिजन में हमेशा ओजोन के बारे में जब कहता हूँ, ये कहता था जब स्नेक था वो शिव जी का गले में बांध के जब रहता है, उस टाइम उन्होंने ईगल का देख के पूछा था, भाई ठीक ठाक हो, क्योंकि है ना, अदरवाइज ईगल इज कंसिडर्ड टू बी मोर पावरफुल देन द स्नेक. But if the snake is there around the neck of Lord Shiva, it feels and it feel that I am more powerful, and then it asks the eagle, where you, how are you? So in the same way, if the ozone also, depending upon its presence, it either becomes a pollutant or it becomes a savior of the atmosphere. So ozone, if it is in the atmosphere beyond certain concentration, then it becomes a gaseous pollutant. But if it is there in the stratosphere, it forms and protects like as an umbrella, protecting harmful radiation. Next. Yeah, sir. Next, इसमें what are all the, wherever we are using ozone depleting substances, refrigeration and air conditioning equipments में हमारा है, और फायर रिटार्डेंट फोम और लिक्विड में है, और बहुत सारा केमिकल्स दैट वी आर यूजिंग लाइक carbon tetrachloride and chloroform etc. These are all there, and firefighting equipments that is also there. So these are the predominantly used ozone depleting substances which we normally use at our household and also industrial and commercial applications. Next. इसमें इसका अगले वाला में है ना, बैकग्राउंड अंटार्कटिक फोल मैंने बताया था 1985 वी हैव सीन द अंटार्कटिक फोल फॉर द फर्स्ट टाइम, and generally what are the ozone depleting chemicals that we are having is chlorofluorocarbons, carbon tetrachlorides, halogens, and methyl chloroform, methyl bromide, hydrochlorofluorocarbons, HCFC, which we commonly say, and chlorine and bromine atoms that undergo a chain reaction leading to the destruction of stratospheric ozone. And also ozone जैसा पहले ही बताया था, डिप्लीशन होने का वजह से वी आर गेटिंग एक्सपोज्ड टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच आर हार्मफुल. जैसे डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया था, वी हैव UVA, UVB, UVC, which is more highly energy, that particular rays causes more impact. It causes skin cancer, eye cataract, damage to marine lives and crops, and human immune system also. So all these things are affected because of the ozone depletion. Next. This also I have tried to tabulate the different substances that we normally use: refrigerant, foam, fire suppressant, and also aerosols that we are using it on a day-to-day application widely, from domestic to commercial and industrial applications. Next. These are some pictorial depiction of how we are getting affected due to the
excess exposure to ultraviolet radiation. Marine life and the fisheries yield gets reduced because of the exposure to harmful ultraviolet radiation, and we get a lot of irritation and allergy in the eyes as well as skin. And in general, it is believed that our immune system, that is fighting against diseases, it is reduced on continuous and sustained exposure to the ultraviolet radiation. Damages to the skin happens, and also the damage to plant and crops happen. That is the reason agricultural yield also goes down with the continuous exposure to the harmful ultraviolet radiation. Next, how I have told that we are having certain 1992 India ratified the Montreal Protocol, and then in 1993 we formally started formulating our own policies and regulation. It needs to take into consideration of various factors that is there nationally and internationally before formulating any rule or regulation. So we took a good number of 7 years from 1993 to 2000 to formulate the first rule under the Environmental Protection Act, which is called as Ozone Depleting Substances Regulation Rule 2000. So according to this rule, there are a number of chemicals that have been identified. How many number of chemicals have been identified globally? 96. So a number of chemicals have been identified, which were tabulated systematically, and depending upon its ozone depleting potential and also the global warming potential, the date for their phasing out have been worked out globally. Out of this 96 substances, only what we have achieved is 98% of these 96 substances have been phased out globally. From when? From the 1992 onwards till 2022. So this is the success story globally of ozone depleting substances. I have tried to give the link over here for the ozone depleting substances regulation rule 2000, which is enacted by Ministry of Environment and Forest, Government of India. For the viewers' sake, I have given this. Next. Okay, so these are some of the dates which I have tried to given. That is March 1991. We have ratified the Vienna Convention, and that led to 19th June 1992. We have party to the Montreal Protocol, and on 17th September 1992, that is almost 30 years before, we ratified the London Amendment, and then financial mechanism of alternative substances research and development. For example, we are phasing out some substance which is used in the chlorofluorocarbon or chloroform or carbon tetrachloride. But these are used for a variety of domestic, commercial, and industrial application globally. Phasing out means, how do we phase out? We should have an alternate, and for that devising an alternate mechanism, industry need to be funded for R&D mechanism. Industry will be doing their own R&D also, but government of India as well as globally, we thought there should be a R&D mechanism through which this can be fastened. This search for alternative substances can be quickened. So this globally financial mechanism was evolved, and then 1993 India's program for ODS substances has started. We also started having R&D program by extending financial assistance to various industries in search of alternative substances for ODS. And in January 2006, we have updated the country's program. And to add to this, latest in August to September 2021, we have ratified the Kaigai agreement also, which recognizes the importance of phasing out of ODS as a part of
global warming program, or otherwise combating climate change program also. So that is the latest addition to this India's progress pathway to the success. Next, please. So what we have done, not only the R&D sector on refrigeration and air conditioning, but also the HCFC phase out program, management program was also implemented. And then for cold chains, India is the largest producer of agricultural product as well as the meat product and fisheries product. So we one of the potential exporter, India is one of the potential exporter of all these products. But for storing this for a long time, because of market forces and also for transportation and then to the port or the airport, we need to store those products. So what we need is cold chain. All these cold chains are having again the RAC substances which are ODS. So R&D programs for all these sectors have gone together from 1993 onwards in India. Next. Okay, here in picture, I have tried to give the same year-wise progress of the ozone depletion progress program of India. So India became a party to the Montreal Protocol in 1992, and then India's program on ODS started in 1993. We have come up with the ODS substances depletion rule, that is in 2000. As I told, all these three I have already mentioned. And then phasing out of the HCFCs and CFCs, that we have done from India completely. And then it came HCFC phase out management program. Stage 1 led to the reduction of this much ton, that is almost 340 tons of ozone depleting substances from India, and also around 46,924 ozone depleting program tons of ozone depleting substances phased out in India. Then hydrochlorofluorocarbons we have phased out in the phase 2 program, and also India played a critical role in the adoption of Kigali amendment, which I mentioned, for phasing down of hydrochlorofluorocarbons, because it is one of the most global warming potential agent also. Next. Okay, next is R&D. What are the R&D programs to support? It went on to support retrofitting of old systems, that is there in either foam sector or in the cold chain sector or in the refrigeration and air conditioning sector or in the chemical sector. And also, as I mentioned, most of the ODS substances have the higher global warming potential. So an alternative to that research funding was done even for the energy efficiency labeling program of all the equipments and instruments that are manufactured in India, so that they will consume lesser ODS, and lesser ODS will have the twin objective of reducing the ozone depleting substances, at the same time reducing the uh, combating the climate change or global warming potential substances are also released. And then development of energy efficiency standards for refrigerators and air conditioning is finalized. And India is the largest producer of fruit and vegetable and largest producer of milk, and one of the leading producers of meat and fish. And all these things require huge storage cold chains. And so R&D has gone into the modernization of existing cold chain storage centers, so that the ODS depletion will also be achieved. At the same time, global warming potential substances will also be phased out. Next. Okay, and then this is another program of Government of India, that is for international Indian Cooling Action Plan program, where the thermal comfort for all is one of the main thing, and the sustainable cooling with energy efficiency is achieved, and the synergies with the ongoing policies and programs. So these are the things that is aimed at the India's cooling plan of broad goals,
that is to be achieved by 37, 38, which is down the line another 10 years ahead. So reduction of refrigerant demand by 25 to 30% is our goal, and the training and certification of more than 1 lakh of servicing technicians, and reduction of cooling of energy requirement by 25 to 40. मैं इसलिए ना जब दिल्ली में हम लोग सबसे पहले ओजोन डे किया था, we started training the air conditioning and refrigeration trainers or repair जो करते हैं servicing people. We started calling them from Delhi as well as Noida, Faridabad and Greater Noida area, and we started training. When I took over as a director in Pondicherry also, all the 6 years we have identified and then we have trained more than 100 people every year, and then we sponsored the program and also we gave them certificate, etc., etc. And the resource persons were called from Delhi or from Chennai, who are globally accredited for ODS reduction training. They are sponsored and identified and recognized by UNEP. So these are some of the intervention programs that we try to do for the global this thing ODS reduction. Next. Next. Yeah, HFC, yeah, is there. Next one, please. I told that India has supported a number of programs till date. We have supported globally, only in India, close to 300 projects with a capital investment of around more than 21 crore US dollars. We have sponsored in India for various alternate product research and development, and this has resulted in close to 50,000 metric ton of ozone depleting substances has been phased out due to successful implementation of R&D program in all the sectors. What are the sectors of implementation in R&D? Aerosol and also foam sector, firefighting sector, refrigeration and air conditioning sector, and also the chemical sector, or otherwise it is solvent sector. So these are the projects that are implemented across India, wherein alternative substances we have done it. Next. The Union Cabinet, latest in 2021, have ratified the Kigali Amendment of Montreal Protocol for phasing down of hydrofluorocarbons by India. And then they will be done in consultation and in close collaboration with the industry, and it is aimed to achieve by 2023. Next. अभी तक तो मैंने ये बता दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओडीएस के लिए क्या कर रहे हैं. नाउ आई एम ट्राइंग टू गिव यू व्हाट एज अ इंडिविजुअल or as a institution like a school or a college or an industry, what we can do our bit, because ultimately we cannot ask every time what the nation has done to us, what the nation has done to us. It is for us also, it is payback time. We should also try to address and tell what we can do. So what we can do, I have told the SDG goals, both the human good health and human well-being, decent to work and economic growth, sustainable cities and communities, and climate action. All these SDG goals are directly or indirectly related to ODS also, because they have global warming potential, they have health and health affecting potential, they have agriculture and fishery affecting potential. So as a consumer, what we should do, we should be aware of these things, and we should act as an informed consumer. When we purchase these products, we should see the global warming potential or ODS potential of these products, and then we should try to purchase, even if it is little costly, those products which is having the least effect on environment. And if you need any further information than this short presentation, you can refer to the net of ozone cell of the Ministry of Environment and Forest, and purchase the refrigeration and air conditioning products with consciousness, and not to waste electricity while using refrigeration and air conditioning products. Next. Be an ozone friendly consumer.
be an ozone friendly homeowner, be an ozone friendly farmer when you are using pesticide and fertilizers, and also when you irrigate, try to irrigate using drip irrigation and sustainable irrigation practices, and also crop rotation practices. That is very important. Crop rotation of your field is very much important. Just to profit making alone should not be the motto of the farmer. They should have the agricultural planning in such a way that they take crop rotation, so this allows lesser consumption of water, and also the recycling of natural minerals and biogeochemicals in the soil as well as in the atmosphere. And be an ozone friendly office worker, be an ozone friendly company, be an ozone friendly teacher. If you are a teacher, always preach regarding this whenever an opportunity comes to the students. And also be an ozone friendly community organizer, like what Dr. KK Agarwal Health Foundation is doing, that they are addressing various related issues to the community. So I am glad that I am being a part of their program today. And thank you to Dr. Vivek Kumar and Dr. Anil Kumar for roping me in and giving me an opportunity. And be an ozone friendly citizen. As individual, what we should do, I have tried to list these things. So think globally, act locally is a slogan of the past. So what we should do is think locally and act locally. That is the what is needed today. And then next slide please. For thank you for your patience listening. And these two links I have given specifically for giving the India's total program of ozone depleting substances program, as well as the success story of India's program on ozone depletion. So for the readers, whoever is interested for extensive reading or research material, you can please go through these two links and then get benefit out of it. Thank you very much for the HCFI for providing me the opportunity, and thank you to the Facebook and YouTube listeners also for the listening to this lecture. And over to you, Dr. Anil. Yeah, thank you, sir. Uh, Thank you, Dwarkanath sir, for a very, very excellent presentation, giving the entire the. You can't listen. I think yeah. Yes, sir. Yes. So thank you, Dwarka sir, for he's my friend and colleague. We worked together for last about 20 years. So हम लोग बहुत साथ साथ different program Delhi government में we organize so many programs jointly for every year for this, including the International Day for Preservation of Ozone Layer and training to the all different stakeholders. So thanks for a very excellent presentation, for very giving details of the everything about this ODS and the ozone layer preservation. सो ओजोन लेयर का भी इम्पोर्टेंस देखा, और नॉर्मली हमारी ड्यूटी द्वारका सर ने बताया कि हमें क्या क्या होना चाहिए ओजोन जो आपका फ्रेंडली इंक्लूडिंग सिटीजन. तो हमारी ड्यूटी आजकल हमारा बहुत से प्रोग्राम्स आप देखिए ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है सेलिंग के, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, या हम उसमें जाते हैं, हर जगह फ्री का कॉन्सेप्ट है. फ्री फ्री बाई वन गेट वन फ्री. सो हियर ऑल्सो our duty is to free. We have to, when we purchase any air conditioner or the kind of refrigerator or any kind of foam or the kind of different materials, so we should also see that there is a slogan ODS free. So we also see और CFC free. हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसमें देखें कि तभी हम उसको परचेज करें. अगर उसमें ये लिखा हुआ है ODS फ्री तो हम परचेज करें, क्योंकि दिस इज वेरी गुड फॉर दी प्रोटेक्टिंग अवर ओजोन लेयर और रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल. अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अगर हम ये ड्यूटी करते हैं, तो आज का लेक्चर जो द्वारका सर से डिटेल में सुना और हम कोशिश की हमने भी बैकग्राउंड देने की, तो इसमें और डॉक्टर के का जो आज हमने ये सुना, और इसमें अगर एक्ट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है. द्वारका सर ने बोला कि थिंक लोकली एंड एक्ट लोकली. तो अगर आज हमने इस लेक्चर को सुना है, इस पे हम अमल करें, और जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप हम जो हमेशा देखें, जो भी अगर परचेज करते हैं एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, ODS फ्री और CFC फ्री और इस तरह के स्लोगन देख करके हम चीज़ों को लें, और जो भी हम इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, उनको यूज़ करें.
और अपनी जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करें, और अपनी पर्टिकुलरली बिकॉज एनवायरनमेंट और हेल्थ इंटररिलेटेड है, और के अग्रवाल सर ने तो एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ पे बहुत काम किया है, लोगों की सेवा की, लोगों की जानें बचाई हैं पर्टिकुलरली इस पैंडेमिक में। तो हमारी भी ड्यूटी है कि हम अपनी एनवायरनमेंट की और एटमॉस्फेयर की हेल्थ को ठीक रखें, अपनी हेल्थ को ठीक रखें। इसी के साथ द्वारका सर का और सभी व्यूअर्स का अपना जो धन्यवाद करते हुए विल क्लोज दिस मीटिंग टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर Thank you, लिसनिंग। sir. Thank you. Thank you to थैंक all यू। the viewers also. Thank you.